रहा है मधुबन तुमसे, ओ बाबा मधुबन वाले। महक रहा है मधुबन तुमसे, ओ बाबा मधुबन वाले। आज चारों ओर के बच्चों में विशेष स्नेह समाया हुआ। आज के दिन को कहते हैं स्मृति दिवस। बाप दादा ने अमृत वेले से चारों ओर देखा, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी बच्चों के दिल में बाप के स्नेह की तस्वीर दिखाई दी और बाप के दिल में भी हर एक बच्चे के स्नेह की तस्वीर समाई हुई। आज के दिन को विशेष स्नेह का, स्मृति का दिवस कहते हो। बाप दादा ने अमृत वेले से भी पहले बच्चों के तरफ से अनेक स्नेह के मोतियों की मालाएं देखी। हर एक बच्चे के दिल में ऑटोमेटिक ये गीत बज रहा है, मेरा बाबा ब्रह्मा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा के दिल में ये गीत बज रहा है, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे। आज हर एक के अंदर और शक्तियों के सिवाय स्नेह की शक्ति ज्यादा समाई हुई। ये परमात्म स्नेह, ईश्वरी स्नेह सिर्फ संगम योग बड़ी अनुभव होता है। ये परमात्म स्नेह जो अनुभवी जाने, हर एक बच्चे को सहज योगी बना देता है। बाप दादा ने देखा सर्व बच्चों में स्नेह का अनुभव बहुत बहुत समाया हुआ। आप सबका जन्म का आधार स्नेह। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं दिखाई देता और शक्तियां कम होगी, लेकिन बाप का स्नेह या निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं के स्नेह का अनुभव मेजॉरिटी सभी के दिल में, चेहरे में दिखाई देता। अभी आप सबको आज विशेष यहाँ तक किसने पहुंचाया? किस विमान में आए, ट्रेन में आए या विमान में आए, सबके सूरत में स्नेह के प्लेन्स
तीर्थ बना है तुमसे ओ अब्बा वो वाले, आबो तीर्थ बना है तुमसे ओ अब्बा वो वाले। महक रहा है मधुबन तुमसे।
ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 4। सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है एक खेल है। अव्यक्त इशारे। दुनिया की किसी भी प्रकार की हलचल अचल अडोल स्थिति में विघ्न न डालें। ऐसे विघ्न विनाशक अचल अडोल बन हर विघ्न को पार कर लो, जैसे यह विघ्न नहीं एक खेल है। पहाड़ राय के समान अनुभव हो, क्योंकि नॉलेजफुल आत्माएं पहले से ही जानती हैं कि यह सब तो आना ही है, होना ही है। स्वमान अभ्यास। करनहार बाबा का निमित्त ब्रह्मा बाप का अनुसरण करने वाला फरिश्ता। मैं किसका साथी हूँ? मैं किसका हाथ हूँ? मैं बाबा का हाथ हूँ। यह हाथ संसार में बाबा का कार्य कर रहा है। मैं सच्चा मददगार हूँ। जिस भी आत्मा से मिलता हूँ उसे सुमान के करीब ले आता हूँ। अभ्यास के लिए पहला पॉइंट, मैं बाबा का राइट हैंड सच्चा मददगार हूँ। दूसरा, मैं बाबा द्वारा प्रज्वलित दीपक हूँ। उसकी रोशनी मुझ में प्रज्वलित है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। हमारे परम पिता, परम शिक्षक और परम सतगुरु बाबा की तरफ से हम बच्चों को रोज बहुत बहुत मूल्यवान कहें, बहुत ही हमको शिक्षाएं मिलती हैं। और हम बच्चों को बाप के द्वारा मिली हुई शिक्षाओं को पहले तो स्मृति रहे, उसकी दिन में या कोई भी कर्म करते समय उन शिक्षाओं की स्मृति हो। जिनको अच्छा लगता है, शिक्षाएं अच्छी लगती हैं, उनको स्मृति भी रहती है। फिर स्मृति जैसी होती है वैसी फिर वृत्ति होती है।
चाहे वो हम ड्रामा को देखें, ड्रामा के सीन्स देखें, हर एक पार्टदारी को देखें, तो उस स्मृति के आधार पर अगर हम सब कुछ करते हैं, स्मृति वृत्ति होती। वृत्ति बहुत बहुत सूक्ष्म है, परंतु बहुत पावरफुल है। देखो दृष्टि, फिर से दृष्टि से पता, कई बार हम किसी से नहीं मिला पाते हैं, आंखें नहीं, तो पता लग जाता है दृष्टि से। स्नेह भी पता लगता है दृष्टि से, लेकिन वृत्ति बहुत सूक्ष्म है। तो अपनी स्मृति को अगर हम जितना स्थायी बनाएंगे, उतना अपनी वृत्ति में भी परिवर्तन आएगा। ये ऐसा है, कोई बात की याद आ गई तो हमारी वृत्ति में आ गया कि ये ऐसा है, ऐसा करता है, फिर हम उसी दृष्टि से उस व्यक्ति को देखते हैं। नहीं, ऐसा है। हमको दादी जान की कहती थी कि रात तक कोई व्यक्ति कैसा भी हो, पर सवेरे उसको आप फिर से आत्मिक दृष्टि से देखो, कल वो क्या था। ये दृष्टि नहीं होनी चाहिए। आज मेरी दृष्टि उसके प्रति, जो बाबा कहते हैं, उस आधार पर हो, तो सूक्ष्म में बहुत तरह के 63 जन्मों के हिसाब किताब है। बाहरी रूप से तो हैं ही जो देह अभिमान के, परंतु बहुत सूक्ष्म में वो हिसाब किताब होते हैं। तो उनको चुकतू करने के लिए ये जो सूक्ष्म रूप के विघ्न आते हैं, उन पर अगर हम अटेंशन देते हैं, तो हमारी उसका एक तरीका यही है कि मेरी दृष्टि किसी को भी उस वो कैसा था पहले, पास्ट में क्या था, वैसी नहीं रखेंगे। और उसके आधार से फिर व्यवहार भी होता है और फिर संसार भी बनता है। तो बड़ा सरल है, सूक्ष्म है, और उसको प्रैक्टिकल में करने में कुछ विघ्न तो आते ही हैं। तो आज बाबा की हम सभी बच्चों के प्रति शिक्षा है। बाबा कहते हैं यह एक खेल है। हर एक के जीवन में खेल अपनी तरह से होता है। खेल में हार जीत भी होती है। कभी हार होती है, जीत होती है, पर कोई खेलते रहते हैं, कोई गिव अप कर देते हैं, मुझे नहीं खेलना है क्योंकि मैं जीत नहीं रही। और कई कहते हैं खेलते ही रहना है क्योंकि मैं जीत रही हूँ। तो हर एक अपने जीवन में सोचे कि जब मैंने खेल खेला या देखा, तो हमारे क्या स्थिति रहती थी। कभी कभी ऐसा होता है। मुझे याद है कि हम लोग जब स्कूल में थे तो एक हाई जंप होता था, पर एक लॉन्ग जंप भी होता था। नहीं, कितना दूर तक आप कूद सकते हैं, वहाँ रेत होती थी। तो वो मेरे को अच्छा लगता था। हाई जंप भी अच्छा लगता था, पर वो थोड़ा कभी कभी नहीं कर पाते थे। पर लॉन्ग जंप जो है, लॉन्ग जंप जो है, हम्म, तो खेल एंटरटेनमेंट भी लग सकता है ना। देखते हैं ना कई लोग, देखो कभी वर्ल्ड कप की क्रिकेट होती है तो हम तो आश्चर्य करते हैं कि चारों तरफ, मैंने देखा भारतवर्ष में कोई सड़क पर है ही नहीं। अभी क्या हुआ, क्रिकेट मैच हो रहा है, क्या देख रहे हैं क्रिकेट में आपकी, किसने कैसे बॉल लगाई, कौन जीत रहा है, क्या देख रहे हैं। हम्म, तो वो तो हुआ टेम्पररी, राइट। खेल 1 घंटे का, 2 घंटे का, मैच हो गया 5 घंटे का, पर ये तो सारा जीवन
इतने खिलाड़ियों के साथ खेल खेलना। और हर एक खिलाड़ी के मन में यही होता है कि मैं जीतूं। बैडमिंटन देखते हैं हम, कई लोग खेलते हैं। तो शटल को ऐसे फेंकते हैं कि वो दूसरा उस तक पहुंच नहीं सके, नहीं। पर दूसरे साइड वाला भी सोचता है मुझे करना ही है। तो दोनों पक्ष जो होते हैं, उधर का चाहे मेरा, दोनों के मन में भावना यही होती है कि हम खेल को जीतें, खेलते रहें। परंतु हार जीत के बाद वैर विरोध नहीं है, खेल है ना। तो अगर हम अपनी स्मृति बाबा की शिक्षा के आधार से बनाएं तो हमारी वृत्ति और दृष्टि, और फिर कृति और सृष्टि। तो आज बाबा हम बच्चों को क्या अभ्यास दे रहे हैं, और जिस अभ्यास को हमें 24 घंटे करना है, वैसी स्मृति रखते हुए खेल खेलो और खेल देखो। तो ये हमारा होमवर्क है, बाबा का इशारा है, और हम बच्चों को धारण करना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया की किसी भी प्रकार की हलचल अचल रोल स्थिति में विघ्न न डालें। आज संसार की जो हालत है, लोभ वश कहो, अहंकार के कारण अपनी अपनी ही जीवन निर्वाह के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं, जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है, उसी को ही खत्म कर रहे हैं। तेल न मिले, फिर अनाज न पहुंचे, तो फर्ज क्या बनता है, सबको सब कुछ मिले। और यहाँ खेल क्या हो रहा है कि पहुंचे ही नहीं। विचित्र है ना ये। लेकिन बाबा ने हमें बताया कि बच्चे ऐसा होगा। तो इसलिए हम जो कुछ भी देखते हैं, तो हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, अचल और अडोल। बाबा ने आदि काल में जब बाबा को साक्षात्कार हुआ, आज का जो दृश्य है, बाबा ने उस दृश्य का वर्णन किया। तो आज आप में से कई तो संसार समाचार नहीं सुनते हैं। मैं पीस विलेज में थी तो मैंने उनको यही बताया कि गैस कितना दाम बढ़ रहा है। हो सकता है 1-2 हफ्ते में खाना इतना महंगा हो जाए। अभी एक रिट्रीट में अगर 200 लोग खाते हैं 4-5 दिन, तो अनाज तो चाहिए ना इतना। तो मैंने कहा भाई रखो ना, महंगा होता ही जाएगा। और पता है कि हर वीकेंड में आपके पास 200-250 भोजन करने वाले होंगे। तो इसलिए खेल देखो, अचल अडोल रहो। परंतु जो आवश्यकताएं हैं, जो मुझे करना चाहिए, उसमें हमें करते रहना है, नहीं तो बहुत बड़ा विघ्न भी आ सकता है। तो इसलिए चलो बाहर जो भी हलचल हो रही है, क्योंकि आपको पता है आजकल लड़ाई समुद्र में हो रही है, पानी में। जो बाबा कहता था ना एक टाइम, मेरा इतना आसमान है, मेरी इतनी जमीन है, अभी मेरा इतना पानी है। आपका जहाज यहाँ से नहीं गुजर सकता है। बंद कर दी कई रास्ते। तो बाबा कहते हैं कि विघ्न विनाशक का कई लेवल के विघ्न हैं, सूक्ष्म में है, स्थूल में है, शारीरिक है, मानसिक है। तो बाबा कहते हैं विघ्न विनाशक अचल और अडोल बनकर विघ्न को पार कर लो। तो इसलिए बाबा कहते हैं जैसे वह विघ्न नहीं एक खेल है।
तो बाबा कहते हैं पढ़ाई नहीं, पहाड़ राई के समान अनुभव हो, पहाड़ राई की तरह। हम्म, क्योंकि बाबा कहते हैं नॉलेजफुल आत्मा पहले ही जानती है यह तो सब होना ही है। हम लोगों को तो न नया लगता है न आश्चर्य लगता है, हम जानते हैं, पर जब रियल होता है तो चलो अचल अडोल रहे, परंतु उसमें मुझे स्थिति कैसी रखनी है और उसके अलावा आपकी जो जिम्मेवारी है उस समय उसका क्या प्रबंध रखना है। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि कंजूस नहीं बनो, परंतु वेस्ट नहीं करो। न बिजली, न गाड़ी की गैस, न अनाज व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यूज करो, परंतु ऐसा भी समय आएगा जो ये सब नहीं होगा, तो क्या करेंगे। तो ये जो आदत पड़ गई है ना बहुत कुछ बहुत यूज करने की, उसमें वेस्ट भी है। तो हर एक अपने जहाँ भी है, चाहे प्रवृत्ति में है, बाबा की सेवा केंद्र पर है, जहाँ भी है, हम्म, हमको इस बात का टेंशन रखना है कि जितना जैसा समय है उस अनुसार अपने को हम एडजस्ट भी करें। नहीं जरूरत है लाइट की कमरे में तो नहीं जलाओ ना, जितनी जरूरत है करो। तो इसलिए हर सीन को, हर बात को एक खेल समझो। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि क्या रियली हम लोग ऐसे देखते हैं, ऐसा हम अनुभव करते हैं कि ये भी एक खेल है। जैसे हम ड्रामा में कहते हैं हर एक एक्टर है, हर एक का पार्ट अपना है। कई बार हम चाहते हैं ये व्यक्ति ऐसा हो, ये करे, फिर याद दिलाओ कि आप तो किसी का पार्ट नोंद करने वाले नहीं है ना। आपके हाथ में तो ड्रामा नहीं दिया हुआ है कि आप लिखो किसी का पार्ट। हर एक का अपना है, आप देखो। और वो पार्टधारी अपना पार्ट बजाए, आप अपना बजाओ। और सदा डायरेक्टर को देखो, उसके इशारे क्या हैं। तो कैसी भी परिस्थिति में अब अटेंशन क्या है अपनी स्वस्थिति पर, और उस स्वस्थिति के लिए क्या करना है, पुरुषार्थ। तो विघ्न पुरुषार्थ में है। अगर हम करते रहें तो पार हो जाएंगे। नहीं, बाबा ने कहा पार होना ही है। विघ्न चला जाता है, विघ्न कभी सदा के लिए तो नहीं होता ना। हम्म। समुद्र में एक लहर आती है, चाहे तो बहुत कुछ ले जाती है, पर अगर देखते हैं कई बार तो वो तो आई चली जाती है। नहीं, तो बात आई है चली जाएगी, पर मैं चल रहा हूँ, मेरे को चलायमान न करे। यही पुरुषार्थ है, यही लक्ष्य है। और बाबा रोज हमें उसकी विधि बता रहे हैं। तो मैं तो बाबा को दिल से बहुत प्यार से धन्यवाद करती रहती हूँ। बाबा कितना कुछ सिखाते हो आप हमें, विजयी बनाने के लिए, विघ्न विनाशक बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। बाबा की रोज हम बच्चों को शिक्षाएं मिलती हैं। तो अभी हम लोग कुछ मिनटों के लिए अपने में इस वृत्ति को या ऐसी स्मृति कि ये तो खेल है, हर एक खिलाड़ी है अपना पार्ट बजा रहे हैं। विघ्न खेल में आते हैं, पर मुझे विघ्न विनाशक बनना है।
ओम शांति। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए। अव्यक्तवाणी 20 जून 1977। सदा सहयोगी बनने का साधन है महादानी बनना। आत्मा के सर्वगुणों का अनुभव किया है जो स्वयं के गुण है, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप। वह सुख, शक्ति, आनंद स्वरूप, इन सभी गुणों का अनुभव है। आनंद स्वरूप व ज्ञान स्वरूप की स्टेज क्या है? उस स्टेज पर स्थित होने का अनुभव है। यह अनुभव करना अर्थात सर्वगुणों का अनुभव करना, सिर्फ शांति को प्राप्त करना स्वयं पर है। अगर हर गुण का अनुभव होगा तो परिस्थिति के समय भी अनुभव के आधार से परिस्थिति को बदल देगा। इसलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है हर गुण के अनुभवी बनना। ऐसा अभ्यास चाहिए जैसे स्थूल लिफ्ट होती है तो जिस नंबर का स्विच दबाओ उसमें ही पहुंच जाएंगी। अच्छा, आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति। तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए। हो सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। अच्छा, 2-4 दिन निकल गए। निकलने के बाद एक बार बाबा को थोड़ी तकलीफ हुई तो मैंने कहा बाबा आज क्लास में नहीं आएंगे क्या? बाबा कहता है मैं तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ, को जरा सी ठंडी लगी, जरा बदन में दर्द हुआ, क्लास में नहीं आए। मेरी को तो इतना फील हो गया कि उस दिन तो रजाई उड़ा के चला गया और आज मेरे को 3-4 दिन के बाद ऐसे ताना देता है। उसी दिन मुझे कह देता, ये कोई अच्छी बात है क्या? मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को ऐसा ठीक नहीं कहा। बाबा ने तुम्हें ऐसे कहा, बाबा ने तुम्हें ऐसे कहा। सारा दिन मेरा मन मेरे को कहता रहा ऐसा कहा। बाबा के साथ घूमने गए तो यूं मैं बाबा का हाथ पकड़ के चलती थी,
उस दिन बाबा का हाथ भी नहीं पकड़ा, मम्मा का हाथ पकड़ा। नकीले की लहरें मुझे कहें, देखो आज बाबा ने तुम्हें ऐसे कहा, तुम्हें ऐसे कहा, तुम्हें ऐसे कहा। तो कैसे जैसी मनुष्य की दृष्टि वृत्ति होती है ना, वैसे उसको सारा संसार दिखाई देता है। मैं भोजन बाबा के साथ करती थी, उस दिन मैंने भोजन भी नहीं किया, अकेले जाके कराई जैसा तैसा। फिर बाबा ने कहा, अरे बच्ची को बुलाओ भोजन करे, कहाँ है? तो मेरे को बुलाने आए, मैंने कहा नहीं मेरे को भूख लगी थी, मैंने खा लिया। बाबा कहता है, देखो मैं देर कर देता हूँ ना, बच्ची को भूख लगती है, उसने खा लिया, अब कल से मैं जल्दी तैयार हो जाऊंगा। मैं सुना, मेरे को अंदर आया, फिर भी हठीला मन, देह अहंकारी मन जो था ना, वो माना नहीं। तो शाम को 5 बजे हमारा योग होता था। योग में बैठे तो बाबा की तरफ बैठते, उस दिन मामा की तरफ बैठी, मामा से दृष्टि देती रही। गीत बजा, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो मन और बुद्धि का युद्ध छिड़ गया। बुद्धि कहे, जब बाबा तुम्हें इतना प्यार करता कहता, तब तुम्हें ख्याल नहीं आता है? इतना जरा सा बाबा ने कह दिया, तुम्हें इतना ख्याल हो गया, ये कोई अच्छी बात है क्या? मन कहे, नहीं नहीं ठीक है, जो हुआ जो तुम कर ठीक है। तो ऐसे ही मन बुद्धि का खेल चलता रहा, मन सोचता भी रहा। जब ये योग पूरा हुआ तो बाबा ने कहा, बच्ची कहाँ, बच्ची कहाँ है, बच्ची कहाँ? फिर मैं दरवाजे के पास ही बैठी थी, बोला या, बोली तुम वहां क्यों बैठी हो, रोज यहाँ आके बैठती थी, आज वहां बैठी हो। मैंने कहा नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। बोला बाबा बुलाता, उठो उठो। जाके फिर मैं बैठ गई सामने। बाबा कहता, अच्छा बच्ची, ये जो गीत बजा है ना, उसका अर्थ क्या है, सुनाओ। अरे मैं तो ऊपर से नीचे गिर गई जैसे। मैंने कहा, भगवान अंतर्यामी, उसने मेरा दिल की बात पढ़ ली। फिर मैंने सच्ची सच्ची जो सुबह से हुआ वो शाम तक का सुना दिया बाबा को, कि बाबा ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, आपने मुझे ऐसे बोला था, मेरा मन ऐसे हुआ, खाना भी नहीं खाया, ऐसे सारी बात सुना दी जो था। बाबा हंसे। बाबा कहता, अच्छा बच्ची मम्मा को बुलाना। मम्मा चली गई थी हम लोगों के खाने की तैयारी कराने के लिए। फिर मम्मा आई तो कहते, बच्ची मम्मा को सुनाओ क्या हुआ। मैंने मम्मा को भी सारे सुना दिया जो हुआ। तो कहता है बाबा, बच्ची मम्मा देखो, मैं नहीं कुछ कहता हूँ, कहने वाला तो वो है, वो कह के चला जाता, मैं फंस जाता हूँ। सुना? तो मैंने कहा, भाई उसको मना कर दो, ऐसे ना कहा करे, उसको जो कहना है उसी समय हमें कह दे, हमको कोई फील नहीं होगा। ये 4 दिन बाद ताने की भेष में कहता, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, उसको मना कर दो, ऐसे मुझे ना कहे। मैं भी बोली थी, बाबा हंस दिया, मुस्कुरा दिया। प्यार की धार, दृष्टि तेरी है निराली, बहती प्यार की धार, भूल ना सकेंगे बाबा हम तेरा अनुपम प्यार। Om Shanti. Constantly experience an unshakable, immovable, and constant stage. Just a game. No type of upheaval in the world should create any obstacles to your unshakable and immovable stage. Become such destroyer of obstacles, so unshakable and immovable, that you overcome all obstacles as though they are not obstacles, but just a game. Experience a mountain to be like a mustard seed, because knowledgeful souls know beforehand that all of those things are going to come and that they are going to happen. Om Shanti.
Om Shanti. Welcome to Avikti Parivar. Today's day 4. Constantly experience an unshakable, immovable, and constant stage. Today's topic, just a game. Self-respect practices. Baba's right hand, true helper of God. Whose hand I am? I am Baba's. This hand is his hand at work in this world. I am a true helper of God. Every soul I meet, I leave closer to their own self respect. Points to practice. Step 1. I am Baba's right hand, a true helper of God. Step 2. I am the lamp Baba has lit, his flame burning in me. Now we will listen to Mohini Didi. In this Om Shanti, in this life, Brahman life, our focus is on self-effort. As much I listen to Baba and I practice. Recently, Baba had said, you all should have self-respect and create the rosary of self-respect. So based on that, the homework has been created. I don't know how many of you are doing, but we tried to create the steps in the homework also, because Baba wanted us to be very stable on one of the self-respect for 10 minutes. And then Baba said, okay, maybe it's difficult for 10 minutes to just be stable in one thought. Do it 5 minutes. So based on Baba's directions, the homework has been created into 2 steps. So we do 5 minutes one and second step 5 minutes. So I think we, so much effort is being done to provide us with this homework. And I'm sure that respect for Baba's direction and the efforts of those who are creating it, we must practice to be in the self-respect. I'm not going to ask how many are doing, but I'm sure you all are doing. And because everything is, this whole awareness, I am Baba's right hand. Because so much struggle happens if I am not appreciated and I do so much. Sometimes I overdo, sometimes I don't want to do. All these different stages come because we forget we are God's helpers. We are Baba's right hand. Always in our lives, remaining connected with Baba is the main source of strength for us. Baba is watching us. Baba keeps our record. It's Baba who gives me power. It's Baba who makes me instrument. So seeing Baba as main director in my life, even whatever part I'm playing, and maybe someone has given me some duties, but it's Baba. So as much situations come in life so that we can use knowledge. Situations come in the life so that I can use power of yoga, increase my power of yoga. So I think that
As Baba had said, that look at the situations, every scene of drama is a game. And I'm sure in your life, somewhere, whether in your school life, college life, or even otherwise, you have definitely played, right? You had been a player in a game. Or is there anyone who never played, right? You all in a different games, right? Maybe it is, whatever. It could be cricket, it could be football, it can be any game, right? Badminton, but we all have played some. So, whatever we listen, you have to deeply contemplate on that. Reflect on what was the experience, what did I feel. I am playing a game and I will continue to play this game. So, one of the questions someone recently asked, thought comes first or awareness comes first? Because we have to change our thoughts into awareness. And awareness then will change into action. So to have right awareness, that means changing every point of knowledge into awareness. Not I have knowledge, I have all the points, but am I aware of that? And awareness then directly affect our all, as I said, attitude, our drishti, our action. So in listening to Baba and changing into my awareness, because then awareness is which will guide my whole life, is very, very important. So even maybe until now, you haven't done or not experienced yet what it is to see everything as a game. We have good opportunity for another 24 hours until we get another new direction or new teachings that I practice for 24 hours. Really, I'm looking at everything as a game or not. Just keep reminding, keep seeing, so that within 24 hours you have a good experience of what it is like to see everything as a game. What did I experience? Did I believe it? Was I able to do it? Did I win? Did I got defeated? All these. So let's all make an attempt and for 24 hours take it as a homework, but also make it a reality in your life so that from now onwards, right, you see everything as one of the part of game, not drama, not scene of drama, but is part of the game. You see how you feel about it. And then you will be able to relate to the point, relate to Baba's teachings in a very practical way. So Baba says that just a game. Say these words, when you see something happen, just a game. And see what comes back to you, a thought and the word, and what it brings to you, what feelings you have when you say just a game. Whether at present, whatever happened and whatever will happen, just a game. So Baba says that no type of upheaval in the world should create any obstacles to your unshakable and immovable stage. No type of upheaval in the world should create any obstacles to your unshakable and immovable stage. Become such destroyer
become such destroyer of obstacles, so unshakable and immovable that Baba says you overcome all obstacles as though they are not obstacles but just a game. It is just a game. Baba says experience a mountain to be like a mustard seed. Because knowledgeful soul knows, Baba says, knows beforehand that all of those things are going to come and that they are going to happen. A knowledgeful soul, because Baba has told us, no, all this will happen, this will happen. I remember Baba used to tell us that all the obstacles come to me and I pass them. Then I am able to share with you that yes, children, this will happen. These kind of storms will come. These kind of forms of Maya will attack you. These kinds of obstacles. So Baba, in advance, through Baba's early morning Murli, Baba tells us everything. And so when we see it, Baba has told us, even what we're seeing today in the world is exactly the scenes which Baba described us. I remember one time Baba said, they have divided everything. This much water, my ocean, this much sky, your plane shouldn't come. You know, this time when we came from India, because of war, they had to reroute, they have to refuel. We used to come directly from Delhi or Bombay or Ahmedabad to New York. And now we stopped in Rome for 2 hours because they had to refuel. We had to take a longer route because we couldn't. It was very unsafe to be in the sky in someone's country, so longer hours. Baba used to say. And I remember when, I don't know how many of you heard that in India, most of the airlines are saying we can't fly now because everything you're not getting or it's expensive. But if we increase the ticket from 3,000 to 8,000, so definitely there won't be too many people. Then our planes, so they're informing the government, all the airlines, that we won't be able to fly. So Baba had said, I remember one time Dadi Gulzar said, nobody will be able to come here and there. And today when you hear this news and see the situations, you just feel, but Baba has told us. Baba had said this will happen. So we shouldn't see it as obstacles or something new. But Baba always says, no, be ever ready. Suddenly things will happen, be ever ready. So ever ready for what? First is to adjust to the situation. Not internally we start having such a thoughts that my stage is shaken. Now what's going to happen? Then Baba says whatever happen is beneficial. Whatever happens, you will be safe. Whatever happen, at least you will get dal roti. If not, uh, or maybe kadi khichdi, whatever, but you will get the basic. So kind of put yourself into those kinds of directions and remain very unshakable and immovable, but practical, right? Look at the reality and prepare yourself accordingly. So, yeah, homework again to remain unshakable, immovable, and look at everything as a game. Om Shanti. Om Shanti. Dear Mohini Didi. So nice to see you again. It's been a long time. Yeah,
after a long time. Where are So you this is, sitting? It's a different kind yeah, of same. background. I'm at home. I'm back to Montreal again. I was away for 3 weeks, but back to Montreal. And yes, this is springtime. So spring means Tulips, tulips. tulips, right? They are Tulips is a beautiful. beautiful. So Mm. especially for you, But I got this. are they from your garden or from outside? No, I wish they would be. They're growing now in Montreal, but we're a little bit, the tulips are coming up now, but not really. Spring is a little bit late this year. It was very cold. But in our hearts, it's always spring. So these are tulips from the store, but just for you. They are beautiful. Thank you. So nice to be with you again. And yes, I enjoyed the topic tonight about being a game. And I have a very interesting topic for you, which is in the game, it seems there's a new player recently. And that new player is called artificial intelligence, which we call AI. It's something we didn't see coming. When you think of it, we had fax machine, then we had phone, some kind of technology, but now it's like artificial intelligence. And what I've seen is that so many Baba songs are now coming Mm. from artificial intelligence. I know we talked about it in Madhuban. You can take a picture of Brahma Baba, and suddenly you can make Brahma Baba dance, sing, give drishti. Brahma Baba can do, maybe it's another birth, like there's Avyak stage, and now there is artificial stage. And recently I saw that there were some who are using Baba's Murli, and through artificial intelligence, they are getting new churnings, new Mm. interpretation. It is so. I was wondering what are your thoughts about, because this is growing a lot, this is a lot of it happening. And I don't think we can say it's all bad. In a sense, technology is not necessarily everything is bad. We can answer email through artificial intelligence. We can get better in understanding, better information. So I was wondering, what is your thoughts on, because we're making effort to be natural. That's what my thinking is. I want to be authentic. I want my understanding to be authentic, to be natural. And now there's this artificial intelligence making beautiful song, beautiful melodies, beautiful everything. What are your thoughts about it? Are we becoming artificial or are we becoming more natural? I like when I was in Madhuban, someone used the word angelic intelligence. And That's so nice. when I hear the word AI, and I always think about angelic intelligence, because I feel we shouldn't be dependent on that. And whatever is created, as I like, songs are beautiful, even the music, the words, and I know some of you know that after Morley, if you want to play song, just play AI song. Exactly whole Morley, every word of Morley is in Mm. that song. So we like it, we enjoy it, but I think that it could interfere our life. It could create some good things, but also a lot of negative things. So I would say that even in the world is being used a lot, but I would rather not use it, to keep away from it. And I know that even in our meeting in Madhuban, we said all these kinds of Brahma Baba's act and photographs, and we shouldn't be allowed to use. That means we shouldn't have. And we tell people not to do that. But I don't think anyone can stop all these things. But also, I came to know as many times you press the button for any kind of YouTube or anything,
then number keep increasing, and also we get very little bit addiction to press that again. So how to keep myself free from that influence? Not only influence, but it could be a trap, it could be a fraud, it could be. So we all have to be very careful of what we're speaking and what our communications are. I mean, it's quite a challenging that we keep ourselves very safe from not being intervened by AI, So, yeah, I mean, I'm very, Right. very much aware about so many things which are also not right. Uh, you know, I mean, we can't do anything, but at least we try to see how I remain unaffected and not much involved in AI. Right. I understand also, you met Brahma Baba, you saw him smiling, giving you a hand, giving totally, you saw him moving. Most of us, we didn't see Brahma Baba moving. We only saw fixed pictures, and only a few have pictures of Brahma Baba really smiling. So I can understand it's very tempting for some people to just, make the picture move a little bit and they feel, oh, Brahma Baba is almost like I can feel something better. Now, you have seen both. So when you see Brahma Baba artificial angel and real angel, what are we breaking or what are we missing with artificial intelligence? Are we removing the sacredness, the holiness, or the purity of Brahma Baba? Or what are we losing through AI? Yeah, I think definitely everything could be beautiful, but that real what he was can never be done through AI in the sense of whether it's his smile, his feelings for us, and the way he loved us, you cannot create those feelings, and those feelings are real. And I know, as you mentioned, that those who haven't seen Brahma Baba, they feel pleasant and they feel, but I don't think it's real, no? So when we hear the stories that these tell us, and or we read the story Adi Dev, it has completely different feelings. I mean, I haven't really tried to go into that whenever I don't want to do it, but I just want to ask, but do you really experience something? I'm sure some people do. Yeah, they do experience something. Definitely. Mhm. What AI about? can be extremely powerful, but is the feeling that we're experiencing connecting us with the real Brahma Baba or Shiv Baba? That would be my question. Definitely we can feel something through AI, but are we connecting with the reality? That would be really, for me, my question. No, no, so that's what I'm asking. Do people feel that it's real? Do you feel that it's real, or you know that it's being created by artificial intelligence? Well, I think that as time, I mean, artificial intelligence is moving very quickly. So what we're going to see in maybe 6 months or 1 year is going to be very different. So as you said, we cannot control it. But the question is about, am I real in my own spirituality? And I think that today the world is becoming more and more confusing. We talked, many months ago about fake news. For me, when I watch many things on social media, honestly, many times I don't know if it's real or if they invented or somebody created that news. And where I'm, connecting this with is what about my own spirituality? I just spend time with my, I call them my lucky sisters, not my lucky sisters, but my lucky sisters. And I really enjoy being, with my sisters because I'm
I'm trying to feel, am I real in my spirituality? Am I authentic in my love, in my caring? And I'm wondering, what about you? What do you think when you see so many Brahmins? Sometimes people are very high, oh, Baba, Baba, and no, they're so high. Is it real? Or is it like, how do you feel authenticity? What do you feel is being authentic in our spirituality? So Baba says, no, that your interaction, your practical life, but also many times Baba says your face and interaction really shows about your spirituality. It's not just, there is sometimes intoxication and you just keep saying Baba. But then there are some mothers, they have real experience of Baba in their life. How they were helped when there was difficulty, how they got power when they didn't feel that they are strong enough. So there are real experiences of many mothers, and there are some maybe which is for short time. And but what I find that actually, uh, I should say majority, 99% Baba's children are spiritual, are authentic, and have love for Baba, commitment towards Yagya, and they constantly feel that, in the self-respect of I am Baba's helper, I am Baba's right hand. So I don't know, not even 1% I would say are influenced by other resources, any kind, whether AI or people's different experiences. If someone's Brahmin life had a lot of obstacles. I remember that, when I was very young, then I don't know how many of you know that one of my auntie, my mother's sister, and her husband, they had got married recently in 1936. So when they heard about Omanli and they went and they left, they surrendered. So after that, my whole family got panic and they said, no, daughters are going to meet BKs, and there was a whole thing happening. But when after partition, they came to Delhi and they were visiting because they're looking for contacts. So they came to my grandfather, law kicks, because they got the address. So he was kind of very anti until then. So one of, her husband, my, uncle, he started talking to me about, don't go very fast, do it, just do it, but don't think of committing, don't. So I told him, can you stop it? Because your experiences are yours and my life is life. Even now when somebody happens, people start telling you stories. When this one was sick, then this medicine. When this, I say, can you stop? Because everyone's body is different, karma philosophy is different. Why you have to compare me with someone who had the similar kind of symptoms? And so I think that also our own self, this whole thing about reality, about the truth, and about, your own experiences. There are people, I find that Brahmins are very, very authentic. I mean, I'm surprised that how very innocent ones or even very professional, intelligent ones. I meet so many in India, and it's they are experiencing what is real, what is spiritual, and so I don't see anything which is not real in them. Very, very authentic. I'm I'm thinking about it also because of today's Murli, Sunday's Murli. And Baba was mentioning two things. One is you can have very high experiences in Amritvela, but then during the day, it's something totally different. And then he was saying also some people may have a certain attitude. Let's say if they're in front of you, they will have a certain attitude. But Baba was asking, is there a difference, if you're not in front of Sister Mohini or if you're not in front of the BK family, how are you when you're all by yourself at home?
Is there a difference? And in that way, I'm wondering, where is authenticity? If I'm one thing at Amrit Vela, another thing during the day, one thing in front of seniors, another thing when I'm all by myself, is this, what do you think about it? Mhm. It's not very common. I think every Baba's child, during day while doing actions, being a karma yogi. I mean, if somebody is an effort maker, all this will not happen. It's very, very rare, very rare. But then, as you But said, Baba that was mentioning sometimes, it this morning in the Murli, so it must not be so rare because that's what he was talking about, no? no, he gives examples so that others can avoid it and others can inculcate in a proper way. Mm, But as you said that, when I'm in India and the news I hear about USA, coming to USA, and when I came, it was completely different in the sense of it was so easy, everything was so smooth, nobody stopped you. But what you hear is so scary, in the sense of, oh, they might do this to you, they might do. Majority people, whether they are visitors or citizens, they come very smoothly and there is no problem. So I think that we should, trust yourself, trust Baba, and always see that everything best will happen to you. So keep those feelings so that, in reality and what Baba says, I think that everyone is making attempt, no? mhm. Even if Baba mentioned, but Baba sometimes gives the example which are rare also, so that we know that it shouldn't be like that, or check yourself properly. So that's how I see it. I think you have a very high angelic intelligence, and you found a way to answer questions in such a way that it becomes a blessing to all of us. So I really appreciate and thank you, Mohini Didi. It's good I like to, ask you questions like this sometimes that are very connected to our reality, but I like the blessing, the way you are phrasing it becomes a blessing. So thank you. And yeah, it's good. Many will be thinking about it next time they create artificial answer to their email or to their Merly churning. I think I want to wish you all angelic intelligence and just keep very free from any kind of temptations and short attainments, go for real. So we have And I Toli know for here. now we don't have artificial Toli, right? We still have real Toli, no artificial Toli. Is nuts Toli, and this is peanuts Toli. Peanuts and Nice. brown sugar. Both are very good, but we can only show you. There is no That's way. all right. Yeah, but actually there were not many, but some from Montreal in the retreat. And I Right. think we gave for every center. I don't know if they took some, but Yes, of it course is. you can get in the real too. Anyway, thank you very much. Thank you, And Manidhi. I think this topic we have never raised or talked about, and I'm happy that you brought up this whole thing. Thank you. Lot Okay. of love, Om Om Shanti, Shanti. everyone in Avyakti Parivar, and very nice to be with you again, Mohini Didi. I missed you. Okay, thank you. Thank you. Mhm. Om Shanti, thank you. So tomorrow is Monday and our schedule from Amritula 3:30 a.m. to 4:45 a.m. in the evening, 5 to 5:30 p.m. Avikti Children Malay class. 6 o'clock Patti will start, followed by Hindi series, English series, and chit chat. Now let's remember Baba and take drishti from Didi.
जिंदगी नहीं कि जैसे खेल ले, हारे या गुजार ले, या कि ऐसे झेल ले। है अमोल जिंदगी नहीं कि जैसे खेल ले, हारे या गुजार ले, या कि ऐसे झेल ले। एक क्या जन्म जन्म की ये तो बाजी है, जीत है कि जिसमें वो खुदा भी राजी है। सारा सौंप दे उसे हमेशा के लिए, सारा सौंप दे उसे हमेशा के लिए। मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। खेल जिंदगी का करना चाहे हारना, तो राजयोग की करे जीवन में धारणा। खेल जिंदगी का करना चाहे हारना, तो राजयोग की करे जीवन में धारणा। शांत स्वास्थ्य सुख की संपदा को पाएंगे, कर्म की कुशलता से सफलता को लाएंगे। प्रभु खजाना लाए हैं आपके लिए, प्रभु खजाना लाए हैं आपके लिए।